A very warm welcome to one and all present here. Today, I, Khushi Rai, am here to let you know about the importance of Guru Purnima. Honorable President, esteemed Vice President, distinguished Vice Chancellor, respected heads of departments, esteemed deans, esteemed faculty members, and my dear fellow students. We gather to celebrate Guru Purnima, a sacred day dedicated to honoring the profound role of gurus in our lives. In various cultures and traditions, Guru Purnima holds deep significance as a day to express gratitude, seek blessings, and reflect on the guidance we have received on our journey of knowledge and self-discovery. The word Guru itself holds immense power. It is a Sanskrit word where Gu means darkness and Ru means remover. Thus, a guru is not merely a teacher, but someone who dispels the darkness of ignorance and leads us towards the enlightenment of truth. In our lives, we encounter many gurus, formal educators, spiritual guides, mentors, and even experiences that teaches us valuable lessons. Each of them plays a pivotal role in shaping our understandings of the world and ourselves. They impart knowledge, offer wisdom, and provide us with the tools to navigate the complexities of life. On this auspicious day, it is important to reflect on the qualities that define a true guru. A guru embodies patience, compassion, and a deep commitment to their students' growth. They nurture not only intellectual development but also moral and spiritual well-being. Their guidance extends beyond the classroom or mentorship. It touches the very core of our existence, helping us to become a better human being. Guru Purnima also reminds us of the importance of gratitude. It's a day to express our heartfelt appreciation to all those who have selflessly shared their knowledge and wisdom with us. Whether it's a teacher who ignites our passion for learning, a spiritual guru who showed us the path to inner peace, or a mentor who believed in our potential, each one of us deserves a great heartfelt thanks. As we celebrate today, let us also acknowledge that the journey of learning is continuous. There is always more to discover, more to understand, and more to share. Let us commit ourselves to lifelong learning and to begin open to the lessons that each new experience brings. In conclusion, let us carry the spirit of Guru Purnima in our hearts throughout the year. Let us honor and cherish our gurus, past or present, for their invaluable contributions to our lives. May we continue to learn, grow, and inspire others as we walk together on the path of knowledge and enlightenment. Thank you very much. Have a very nice day. Hello everyone, myself Arsha Nair. Today we gather here to celebrate a significant day in our cultural and spiritual calendar, Guru Purnima. This day is dedicated to our revered gurus, the guiding lights who illuminate our paths with wisdom and knowledge. Guru Purnima is an occasion to express our heartfelt gratitude towards our teachers and mentors who have shaped our lives and continue to inspire us. In our lives, the role of a guru goes beyond imparting academic knowledge. A true guru ignites the spark of curiosity, encourages critical thinking, and instills value that shape our character. They guide us through challenges, celebrate our successes, and help us from our failures. In the context of our academic institution, our esteemed President, Vice President, Vice Chancellor, heads of department, deans, and faculty members play this pivotal role. They are the torchbearers of knowledge and wisdom, ensuring that we, as students, are equipped with the skills and mindset needed to navigate the complexities of the world. To our respected President, your visionary leadership steers the institution towards excellence. To our esteemed Vice President, your support to both faculty and students is invaluable. To our Honorable Vice Chancellor, your dedication to upholding academic standards inspires us all. To the heads of departments and deans, your expertise and guidance are the pillars of our academic strength. And to all faculty members, your tireless dedication to teaching and commitment to students' success are deeply appreciated. On this auspicious occasion of Guru Purnima, let us take a moment to express our gratitude to all our gurus. Let us acknowledge their contributions, their sacrifices, and their unwavering support. It is because of them
that we are able to dream, achieve, and excel. In conclusion, I would like to say that while the world around us is ever changing, the wisdom imparted by our gurus remain timeless. As we move forward in our respective journeys, let us carry the lessons taught by our gurus in our hearts and strive to live up in the teachings. Thank you. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम उनका कर्जा। महा भी है, महा नहीं भगवान से बढ़कर गुरु का ही उतना ही मान दर्जा है। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये तो गुरु ने सिखाया था। नमस्कार, मैं गोपाल कृष्णा सुब्रमण्यन BSc IT सेम 3 से यहाँ उपस्थित माननीय प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, VC सर और सभी अध्यापकों का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। गुरु का महत्व ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, हम आज यहाँ पर बैठे हैं जरूर इसके पीछे गुरु का आशीर्वाद और उनसे लिया गया ज्ञान है। गुरु खाली हमें टीचर्स ही नहीं जो स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, हमें किसी से भी कुछ भी सीखने मिलता है वो हमारा गुरु होता है। अपने जीवन में अपना पहला गुरु माँ होती है जो हमें अपने जीवन के पहला कदम रखना सिखाती है। माँ बाप ने तो हमें सपना देखना सिखाया था, पर वो सपने को हकीकत में बदलना हमें अपने गुरु ने ही सिखाया था। गुरु का महत्व देने के लिए ही महान गुरु वेद व्यास जी की जयंती पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान शिव द्वारा अपने शिष्य को दिया गया ज्ञान था। इसी दिन गौतम बुद्धा ने परिवर्तन किया था। हम एक बेहतर इंसान बन गए हैं। अगर गिर गए तो उठना सीख गए। किस रास्ते पर चलना है वो भी समझ गए हैं। कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस चीज़ से दूर रहना है यह समझ गए। सही और गलत का फर्क करना सीख गए। पर इन सब का क्रेडिट किसको जाता है? वो जो डेबिट कार्ड बनकर घूमते हैं, हमारे सफलता में मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, वह हमारे गुरु। माता पिता अपने बच्चे से संस्कार देते हैं, पर गुरु सभी बच्चों को समान मानकर ज्ञान देता है। गुरु और शिक्षक का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु अपना महत्वपूर्ण अदा करता है। गुरु के ज्ञान और संस्कार के आधार पर ही उसका शिष्य ज्ञानी रूपी बनता है। गुरु अपने शिष्य से कोई स्वार्थ नहीं रखता है, उनका उद्देश्य सभी का कल्याण ही होता है। गुरु को उस दिन अपने कार्य पर गर्व होता है जिस दिन शिष्य एक बड़ा और अच्छा इंसान बन जाता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।